Okay, so hello aspirants, I hope all of you are doing perfectly well. आप लोगों को पता है कि फिलहाल ये जो क्लासेस चल रहे हैं इन इंटायर क्लासेस में हम लोग मोस्टली कैनोनिकल एंसेम्बल्स के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैनोनिकल एंसेम्बल्स अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम्स दिया जाए हमारे एग्जाम्स में, तो हम लोग कैसे उन सारे प्रॉब्लम्स को अटैक करेंगे। सो एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने फिलहाल स्क्रीन पे है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए और देख के बताइए कि कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन तुम्हारे नेट एग्जाम में आया था और नेट दिसंबर 11 में आया था। पूछा गया है कि अ वन डायमेंशनल चेन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ n rods each of length a when stretched by a load। जब एक लोड से तुम स्ट्रेच करते हो then each rod can align either parallel or perpendicular to the length of the chain। The energy of a rod is minus epsilon when aligned parallel to the length of the chain and it's plus epsilon when aligned perpendicular to the length of the chain। सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर व्हाट इज द एवरेज लेंथ। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो चीज करना है ये यहाँ पे लिख लेना कि व्हेन द रॉड इज पैरेलल, व्हेन द रॉड इज पैरेलल टू चेन लेंथ, तब तुम्हारा एनर्जी क्या है, E इज माइनस एप्सिलॉन। और एक चीज कि when the rod is perpendicular to chain length, तब तुम्हारा क्या सीन है एनर्जी का। सर एनर्जी तब है तुम्हारा प्लस एप्सिलॉन। अब जरा मुझे बताओ पूरे सिस्टम का अगर मैं तुमसे कहूं कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा z, जस्ट बिकॉज दो ही एनर्जी स्टेट हो सकते हैं, दे आर नॉन डिजेनरेट। तो e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन, एक जो तुम्हारा वो है क्या कहते हैं, एक जो तुम्हारा रॉड है उसका एनर्जी सेट आइदर हो सकता है प्लस एप्सिलॉन और हो सकता है माइनस एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन उसका तुम्हारा वो क्या है। द पार्टीशन फंक्शन फॉर वन रॉड, द पार्टीशन फंक्शन फॉर वन रॉड, एक रॉड का पार्टीशन फंक्शन। सर एक रॉड का दो ही पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, आइदर तो वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द चेन हो सकता है, नहीं तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द चेन हो सकता है। तो उस हिसाब से पार्टीशन फंक्शन आएगा e टू द पावर ऑफ आइदर माइनस बीटा इनटू एप्सिलॉन, नहीं तो प्लस e टू द पावर ऑफ प्लस बीटा इनटू एप्सिलॉन, माइनस बीटा इनटू माइनस एप्सिलॉन व्हिच इज प्लस बीटा इनटू एप्सिलॉन। सो दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। अगर तुम्हें पार्टीशन फंक्शन पता चल गया देन तुम निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी that a rod is parallel to the chain length, probability that a rod is parallel to chain length क्या होता है, अगर पैरेलल है तो उसका एनर्जी क्या होगा, अगर पैरेलल है तो एनर्जी होगा माइनस एप्सिलॉन, तो e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू माइनस एप्सिलॉन बाय z, e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू माइनस एप्सिलॉन मतलब बीटा इनटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय z। और बताओ प्रोबेबिलिटी दैट अ रॉड इज परपेंडिकुलर टू चेन लेंथ, परपेंडिकुलर टू चेन लेंथ है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन बाय z, e टू द पावर ऑफ माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन बाय z। तो जरा मुझे बताना कितने रॉड्स पैरेलल हैं। तो नंबर ऑफ रॉड्स पैरेलल टू चेन लेंथ, कितने रॉड्स चेन लेंथ के साथ पैरेलल हैं। टोटल नंबर ऑफ रॉड्स बोल दिया गया है n है, तो n मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर ऑफ बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई z
और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ रॉड्स परपेंडिकुलर टू चेन लेंथ, तो नंबर ऑफ रॉड्स परपेंडिकुलर टू चेन लेंथ कितने होंगे? चेन लेंथ कितने होंगे भाई? ये होगा आपका कैपिटल N इंटू e⁻⁻ बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई z। अच्छा भाई एक बात बता कि अगर तेरा चेन दिखने में ऐसा है, ये रॉड परपेंडिकुलर है, ये रॉड पैरेलल है, फिर ये रॉड परपेंडिकुलर है, ये रॉड पैरेलल है, ये रॉड परपेंडिकुलर है, ये रॉड पैरेलल है, फिर और एक रॉड पैरेलल है, फिर ये रॉड परपेंडिकुलर है, इसके बाजू में और एक रॉड परपेंडिकुलर है, फिर दो पैरेलल परपेंडिकुलर। तुम लोग देख सकते हो जो रॉड पैरेलल है वही सिर्फ लेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो रॉड परपेंडिकुलर है उनका लेंथ चेन के लेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसका टोटल लेंथ क्या है, तो सिर्फ जो रॉड पैरेलल है उनके लेंथ को तुम गिनोगे, नंबर ऑफ पैरेलल रॉड्स कितने हैं, और पैरेलल रॉड मिल गया तो हर एक पैरेलल रॉड का लेंथ अगर L है तो तुम बोलेगा N1 इंटू L सर, जहाँ पे N1 आपका नंबर ऑफ पैरेलल रॉड्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओनली पैरेलल रॉड्स कंट्रीब्यूट्स टू द लेंथ ऑफ द चेन, only parallel rods contributes to the length of the chain, only parallel rods contribute to the length of the chain, contribute to chain length, contribute to chain length, therefore L is equal to तुम्हारा टोटल एवरेज लेंथ क्या होगा? टोटल एवरेज, हर एक रॉड का लेंथ कितना है? हर एक रॉड का लेंथ A है, तो L is equals to, suppose this is your N1 and this is your N2, it will be actually equals to N1 into A, that will be actually NA e to the power of beta into epsilon divided by your partition function e to the power of beta epsilon plus to the power of beta epsilon plus e to the power of minus beta epsilon। तुम एक काम कर सकते हो, ऊपर नीचे माइनस बीटा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करके, या ऐसा भी हो सकता है, सी Na इंटू, हाँ अब ऊपर नीचे e to the power of माइनस बीटा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दो, यू गोना गेट Na डिवाइडेड बाई 1 plus e to the power of minus 2 beta epsilon, that is the average length, Na divided by 1 plus to the power of minus 2 beta into epsilon, see 1 by kb मतलब बीटा तो into epsilon, so option C is correct इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नेट फरवरी 22 में आया था, और इतना बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, एक बार जरा देख लो। बोला गया पॉलीमर मेड अप ऑफ n मोनोमर्स, एक पॉलीमर जो n मोनोमर से बना हुआ है, is in thermal equilibrium at temperature T, each monomer could be a length of either A or 2A, first contributes zero energy while the second one contributes energy epsilon, तो average length of the polymer क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द मोनोमर इज A, तो उसका एनर्जी क्या हो सकता है? 0। एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ A, एनर्जी of the monomer of length A क्या है? 0। एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ 2A क्या है? एप्सिलॉन। अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ A is 0, एनर्जी ऑफ द मोनोमर ऑफ लेंथ 2A is equals to एप्सिलॉन। तो पार्टीशन फंक्शन क्या है? For a single monomer, e to the power of negative of beta into 0 plus e to the power of negative of beta into epsilon, that is 1 plus e to the power of minus beta into epsilon। अब जरा बताना कि कितने मोनोमर हैं जिसका लेंथ A है। ये ऐसा लिख सकते हो, पहले प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दैट अ मोनोमर हैज अ लेंथ A, और फिर लिख सकते हो नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ लेंथ A। प्रोबेबिलिटी
that a monomer has length a, क्या है P1 that is equal to, अगर a होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा 0, t to the power of minus beta into 0 divided by z. Probability that a monomer has length 2a, क्या लिखोगे P2 that is equals to, अगर मान लो कि एनर्जी अगर लेंथ अगर 2 है तो एनर्जी है एप्सिलॉन to the power of minus beta epsilon excuse me to the power of minus beta epsilon divided by z. Now just tell me this thing very clearly कि number of monomers जिसका लेंथ a है कैसे निकालोगे? Number of monomers of length a और number of monomers of length 2a कैसे निकालोगे सर? कितने मोनोमर है जिनका लेंथ a है, कितने मोनोमर है जिसका लेंथ a है सर? टोटल नंबर ऑफ मोनोमर देख लीजिए कितना है, n है, तो n मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कि एक मोनोमर का लेंथ a होगा, दैट इज क्या होगा n इंटू p1 दैट इज योर n1 और 2a है कितना लेंथ होगा n इंटू p2 दैट इज योर n2. अब मुझे बताओ एवरेज लेंथ of the polymer, पूरा पॉलीमर का एवरेज लेंथ क्या होगा सर? जितने मोनोमर a लेंथ के हैं, दैट इज n1 तो मल्टीप्लाइड बाई a प्लस जितने मोनोमर 2a लेंथ के हैं दैट इज n2 मल्टीप्लाइड बाई a. ऑफ कोर्स बहुत सही बात है कि अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ 2a है, फिर a है, फिर 2a है, फिर a है, फिर 2a है, तुम क्या करोगे? तुम देखोगे कितने a लेंथ के हैं, काउंट करोगे, काउंट मतलब मान लो 3 है a लेंथ का तो 3 into a प्लस 6 है 2a लेंथ का तो 6 into 2a करके ऐड कर दोगे. तो वैसे ही मैंने किया कि मैंने देखा कितने a लेंथ के हैं दैट इज n1 है तो n1 into a, कितने 2a लेंथ के हैं दैट इज n2 तो n2 into a. नाउ टेल मी n1 into a प्लस n2 into a अगर करूँगा तो क्या आ जाएगा? n कॉमन चला जाएगा, p1 प्लस p2 हो जाना चाहिए. n into a प्लस n2, अच्छा जितने लेंथ तुम्हारे n2 है, जितने 2a लेंथ के हैं तो उसके साथ 2a मल्टीप्लाई करो भाई. तो देखो n1 into a प्लस n2 into 2a, तो n1 into a मीन्स np1a, np2 2a, तो np1 क्या है तुम्हारा e to the power of minus beta into 0 that is 1 by z. This is 1 by z. This is actually 1 by z. This is actually to the power of minus beta epsilon by z. तो 1 by z आ गया, तो n into p1 that is n by z that is your n1 multiplied by a प्लस यहाँ पे क्या होगा n2 क्या है कैपिटल N into p2 तो कैपिटल N e to the power of minus beta epsilon by z कैपिटल N into p2 into 2a. So what you can do is, उन लोगों ने पूछा है एवरेज लेंथ क्या होगा जब टेम्परेचर इज एप्सिलॉन बाई के, तो दिस थिंग विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू n into a डिवाइडेड बाई z को यू कैन टेक कॉमन, तो na डिवाइडेड बाई z क्या है तुम्हारा? z है e to the power 1 प्लस e to the power of minus beta epsilon, 1 प्लस e to the power of minus beta epsilon, ये हो गया. एंड देन na बाई z को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 प्लस 2 into to the power of minus beta epsilon, 2 into to the power of minus beta epsilon. उन लोगों ने बोला कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ जब टेम्परेचर इज एप्सिलॉन बाई के बी. अगर तुम्हारा टेम्परेचर बोल दिया गया है एप्सिलॉन बाई के बी तो जरा मुझे बताओ, यहाँ से टेम्परेचर बोल दिया गया एप्सिलॉन बाई के बी, तो ये बीटा मतलब क्या होता है 1 बाई के बी टी, के बी इंटू टी. टी क्या है एप्सिलॉन बाई के बी कैंसिल तो 1 बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना.
मतलब KBT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो बीटा है तुम्हारा 1/KBT, दैट इज 1/एप्सिलॉन, राइट। इफ T इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई KB, देन बीटा क्या हो जाएगा, बीटा मतलब 1/KBT मतलब 1/एप्सिलॉन, तो जहाँ जहाँ बीटा दिखे वहाँ पे 1/एप्सिलॉन पुट कर दो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर ये हो जाएगा Na, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन पुट करो तो 1 + 2 × द पावर ऑफ 1 + 2 × द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई बीटा की जगह आ गया यहाँ पे 1/, तो 1 + e to the power of -1, दैट्स ऑल। अगर ऊपर नीचे e से मल्टीप्लाई करें तो e + 2 डिवाइडेड बाई e + 1, Na into e + 2 divided by e + 1, that is the answer। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा था उनके लिए मैं मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूँ, जरा आप देख लो। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। देखो अगर उन लोगों ने कहा है टेम्परेचर इज एप्सिलॉन बाई केबी, अगर टेम्परेचर एप्सिलॉन बाई केबी है तो केबी तुम्हारा एप्सिलॉन होगा, बीटा क्या होता है 1/केबी, तो बीटा क्या होगा 1/एप्सिलॉन। अब ये जो एक्सप्रेशन है तेरा, ये जो एक्सप्रेशन है तेरा, इस एक्सप्रेशन में तू पुट कर दे बीटा इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन, यू विल सी यू विल गेट 2 × द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 1 + द पावर ऑफ -1, तो ऊपर नीचे e से मल्टीप्लाई कर दो तो e + 2 / e + 1, दैट इज आंसर। Na into e + 2 / e + 1, Na into e + 2 / e + 1। सो इन टर्म्स ऑफ Na पूछा था उन लोगों ने, तो ये 2 + e + 2 / e + 1 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो वो बच्चा एकदम पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। देखो we can solve a question that says just hang on for a moment। ठीक है, just hang on, let me just take a question from here and then we will December 15। ओके, आप गॉट अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। दिसंबर 15 में आया था ये, बहुत बढ़िया सवाल है।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था दिसंबर 15 में, ओके। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 15, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन में कहा गया है कि इट्स दिसंबर 15 नेट एग्जामिनेशन। बेटा क्वेश्चन में कहा गया है, they have said in the question कि an ensemble of non-interacting spin-half particles, एक ensemble है जो non-interacting spin-half particles से बना हुआ है, is in contact with a heat bath at temperature T, मतलब canonical ensemble का question है। Subjected to an external magnetic field, each particle can be in two quantum states of energies, either plus minus epsilon naught. The mean energy per particle is minus epsilon 0/2, then the free energy per particle क्या होगा? तो एक system of non-interacting spin-half particle है। अच्छा, एवरेज एनर्जी पार पार्टिकल पूछा गया है ना। सो फॉर अ सिंगल स्पिन subjected to an external magnetic field, okay, for a single spin energy E is equals to negative of जो चीज होता है तुम्हारा नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट एच हो जाता है, नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट एच हो जाता है। फॉर अ सिंगल स्पिन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट एच। वी कैन जस्ट से दैट कि एक सिंगल स्पिन की अगर बात करें तो एनर्जी तुम्हारा नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट एच होगा। अगर एक सिंगल स्पिन के लिए तुम्हारा एनर्जी नेगेटिव ऑफ म्यू डॉट एच है तो तुम लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, gs into e by 2m into s dot this gs into e by 2m। अब q by 2m होता है, अब यहाँ पे e है तो इट्स फाइन, द चार्ज इज e, तो e divided by 2m into s vector the spin of that single spin particle dot the magnetic field। यहाँ पे h लिख सकते हो या b लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम वैसे लिखो, बट मैं यहाँ पे h लिख रहा हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड h। तो h अगर लिखूंगा तो s डॉट h तुम्हारा क्या होता है, s होता है h कट बाई 2 इंटू s डॉट h, मतलब क्या होगा, मान लो कि तुम्हारा h जो वेक्टर है, तुम्हारा जो h वेक्टर है अगर वो z कैप की तरफ है, मतलब z डायरेक्शन में अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है तो s डॉट h क्या होगा, एस जेड gs इंटू ई बाई 2m। अच्छा, ये माइनस और इलेक्ट्रॉन का माइनस मिलके प्लस कर दिया है, ठीक है, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए हैं। नाउ यू कैन सी that just wait for a moment, okay। Just wait for a moment। मोस्टली स्पिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे साइन का थोड़ा इशू होता है। साइन के इश्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा एक्चुअली जो आता है वो चीज़ और एक्चुअली में साइन वाले जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे ठीक है, देखो बेसिकली आई एम राइटिंग इट एज, लेट्स राइट इट एज gs इंटू ई बाई 2, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस चीज़ को सिंपली लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ म्यू, म्यू तुम्हारा क्या है, गामा इंटू एस, गामा इज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो नेगेटिव ऑफ गामा इंटू एस डॉट एच, जहाँ पे गामा इज योर जायरोमैग्नेटिक रेशियो।
जहाँ पे गामा तुम्हारा है जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। अगर गामा तुम्हारा जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है तो एस डॉट एच क्या हो जाएगा, एस डॉट एच क्या हो जाएगा, एस डॉट एच तुम्हारा एस जेड हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ गामा इंटू एच, नेगेटिव ऑफ गामा एच into S can be taken as SZ operator. Now as we all know that this operator mu is an operator, तो यहाँ पे S is an operator. This is the Hamiltonian for the system. This is the Hamiltonian for a single spin energy, that is the Hamiltonian for the system. Energy that is the Hamiltonian for the system is this. Now SZ can have two values only, either plus half or minus half, plus h cut by 2 या minus h cut by 2. मैं लिख सकता हूँ एस जेड इज आइदर योर प्लस एच कट बाई 2 या माइनस एच कट बाई 2. सो दिस थिंग कैन बी इक्वल्स टू, इफ एस जेड इज प्लस एच कट बाई 2 देन दिस इज माइनस गामा एच इंटू एच कट बाई 2, और इफ योर एस जेड इज प्लस एच कट बाई 2 then the energy is negative, and if S is minus h cut by 2 it will become gamma h cut divided by 2 if S is minus h cut by 2. So whenever your spin is along the direction of the magnetic field, that means the energy should be minimum. There is no torque applying on that spin anymore, no forces are being applied on that spin anymore, so definitely the energy has to be minimum. So when Sz is h cut by 2, that means the spin direction and the magnetic field direction are same. The spin has a projection along the direction of the magnetic field. Then energy of the system is minimum, that means the system is stable. And when the spin is opposite, has a projection opposite to the direction of the magnetic field, then of course if you will experience a torque or something, the system, the magnetic field will always try to rotate the spin along the direction of the magnetic field, and that's why the energy is maximum. That's not a stable configuration. So of course this thing and this thing, so Sz is this to this, if Sz is minus h cut by 2, so the energy of the system is this. Now I can write it in a bit of better way. I can just take this gamma h cut by 2 as mu. I can take this gamma h cut by 2 as mu and write it in a different way. So this magnetic dipole system can be written in that way. Negative of mu dot b, from where the energy is actually mu into h. So this whole thing gamma h cut by 2, this whole thing gamma h cut by 2, this whole thing gamma h cut by 2 can be taken as epsilon or minus epsilon. This whole thing gamma h cut by 2 can be taken as epsilon or minus epsilon. So I can take this, I can call that, if it's plus epsilon, so this is your plus epsilon, but gamma h cut by 2 को I can say gamma h cut by 2 को I'm giving the name as mu b, or mu, whatever you call mu. Let's call this thing as mu. But of course there is a difference between this mu and this mu. Okay, this is a capital mu, this is a small mu, so there is a hell and heaven difference between these two mu's. This is a capital mu and this is a small mu. This is called magnetic dipole moment, M, of that system. Magnetic dipole moment, this mu is just simply a mu. It's a different notation. This is the magnetic dipole moment of that. Negative of if you want, so I can write it as M also, to tell you that this is the magnetic dipole moment. It has nothing to do with this mu. The magnetic dipole moment, negative of m dot h, where m is the magnetic dipole moment of the system, that is gamma into h. M is the magnetic dipole moment. Magnetic spin magnetic dipole moment. Spin magnetic dipole moment. So that is basically your spin magnetic dipole moment, and gamma h cut by 2 I'm taking as gamma h cut by 2 I'm taking as mu is just a notation. So this thing can be written as negative of mu into h when z तुम्हारा h cut by 2
when if Sz is h cut by 2 and it is plus mu into h if your Sz is minus h cut by 2. The same thing can also be written as plus epsilon or minus epsilon in that way. So it's fine. Now I can write down the partition function for that system. So for a single spin, partition function. What is the partition function for a single spin? Anybody wants to say? What is the partition function for a single spin? Anybody wants to say? So it will be e to the power of z1. It will be actually e to the power of negative of beta into the energy minus mu h. So plus beta mu h plus e to the power of negative of beta into minus negative of beta into plus mu h. So minus beta mu h. That is the partition function of a single particle, which can be written as 2 cos h of beta mu h. Good thing, you know this. So partition function for n particle, n number of spins. Okay, this is the partition function for a single particle. If you are asked the partition function for n particle, so Zn should be equals to Z1 to the power of n. I have just mentioned it for your information if you ever required it. So it's they have said what is the average energy or the mean energy of the system. What is the average energy of the or the mean energy of the system? So average energy of a single particle will be equals to negative of partial differentiation of beta ln of Z1. Negative of partial differentiation of beta ln of Z1. Negative partial differentiation of beta ln of Z1, which will be equals to, you see, cos h of beta mu h. If you do the differentiation, so you will have 2 here. Okay, you have negative of partial differentiation of beta ln of this thing. So 1 by 2 cos h of beta mu h. And then if you differentiate this thing, you're going to get 2 cos h of beta mu h. The differentiation will be sin h of beta mu h, and if you do the differentiation of beta mu h, you're gonna get simply mu h. So this and this will get cancelled out. Tan h of beta mu h into mu h into tan h of beta mu h, negative of. You're gonna get mu h into tan h of beta mu h. So I can simply write negative of mu h into tan h of beta mu h. That's all. So what is the average energy for n number of particles? Just because the spins are non-interacting, it is n into average energy for a single particle. Just because they are non-interacting, that's why you can simply multiply it. Just because they are non-interacting, because non-interacting hota hai, so you can always do that. So n into average value of E1 क्या आ जाएगा? Negative of n mu h tan h of beta mu h. That's all. Okay, now what they have said, the mean energy of a single particle is minus epsilon naught by 2. उन लोगों ने क्वेश्चन में कहा है कि मीन एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज माइनस, अगर एक सिंगल पार्टिकल का मीन एनर्जी उन लोगों ने कहा है माइनस एप्सिलॉन नॉट बाय 2. दैट्स अ गुड थिंग. अच्छा, बोला गया कि टू स्टेट क्वांटम सिस्टम, द टू क्वांटम स्टेट्स आर प्लस एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट. तो अगर प्लस एप्सिलॉन नॉट तो तुम्हारा क्या होगा फिर? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन एंड देयर डेफिनेशन, प्लस एप्सिलॉन नॉट इज योर म्यू एच, माइनस एप्सिलॉन नॉट इज योर negative of mu h. So that is, I can write it as like this way. यहाँ पे लिख सकते हो गामा h कट by 2 is your mu, तो negative of mu h, तो minus epsilon naught, that is negative of mu h, plus epsilon naught, that is positive of mu h. That's the whole thing.
you will have, this thing is mu, right? So minus mu h plus mu h, like this. And from that thing you can just simply write it down. This is your average energy for a single particle. And now tell me what they have mentioned. So that is for a single particle, just because we know that mu h is your epsilon naught. So this is minus epsilon naught tan h of beta epsilon naught. Okay, now what they have said, that a mean energy of a single particle is minus epsilon naught by 2. Then what is free energy? Now according to question, question के अनुसार mean energy of a single particle has been said minus epsilon naught divided by 2. So therefore if I equate this term with this term, minus epsilon naught कट जाएगा, you're gonna get tan h of beta epsilon naught is equals to half. You're gonna get tan h of beta epsilon naught by 2 is equals to half. Then how will you do it? You're gonna get tan h of beta epsilon naught is equals to half. That's what you're gonna get. Now they have said what is the Helmholtz free energy of part particle. So Helmholtz free energy for a single particle is equals to negative of kBt into ln of z1, that is minus kBt into ln of, what is your z1? So z1 is this 2 cos h of beta mu h, 2 cos h of beta mu h, that's your z. It's a good thing. Now tell me, you know tan h of beta mu h is half. So what is cos h of beta mu h? If you know tan h of beta mu h is half, so what is your cos h of beta mu h? It's a good thing to answer. देखो we know that cos h square minus sin h square is equals to 1, right? So sin h square is equals to cos h square minus 1 का root over. It's a good question. Let's try to solve it by this way. We know that tan h of beta into epsilon naught is equals to 2, that is sin h of beta epsilon naught by cos h of beta epsilon naught is equals to 2, or rather I have a very simple way of doing it. Just because we know that sec square hx plus tan square hx is 1. Sec square hx sec h square of x tan h square of x is equals to 1. And that's why you know that tan h square 1 minus tan h square is equal to sec h square. So sec h of x is equals to root over of 1 minus tan h square x, and therefore cos h of x is equal to 1 divided by root over of 1 minus tan h square x, and therefore cos h of beta epsilon
cos h of beta epsilon will be equals to epsilon naught will be equals to 1 divided by root over of 1 minus tan h of beta epsilon ka square, that is 4. Sec h square plus tan h square is equals to 1. Okay, so it should be 1 minus tan h square. Now you have said, okay, this was half. Tan h was not 2, it was half. Good, thank God. This was half. So 1 minus tan h square means 1 by 4. So you're gonna get 4 minus 1, that is 3 by 4, root 3 by 4 means root 3 by 2, so 2 by root 3. 2 by root 3. Now I can put it here. Minus kbt to ln of 2 cos h of, see, cos h of beta mu into h is your epsilon, beta into epsilon naught. Then now cos h of beta into epsilon is 2 root 3, so it's 4 by root 3 of ln, and there is your minus kbt. Very important question. Minus kbt into ln of 4 by root 3. Minus kbt into ln of 4 by root 3. Free energy per particle will be equals to ln of 4 by root 3 minus kbt. Okay, fine. So, but we have the mean energy is minus epsilon naught by 2. Then free energy per particle. So, for this question we have e to the power of, okay, 2 cos h of beta epsilon, then minus epsilon into tan h of beta epsilon naught, cos h of this, okay, tan h of beta epsilon naught. Now this thing is equals to minus epsilon naught by 2, minus will cancel out, so tan h of beta epsilon is equals to half. Good. Then for AF I have minus kbt into ln of z1, so negative of kbt into ln of 2 cos h of beta epsilon. Okay, x square h, x plus tan square is equals to 1. So this is 1 minus tan root over of, it's 1 by 4. So this thing is actually your 3 by 4, root 3 by 2, so 2 by root 3 cos h of this. So 2 by root 3 means 4 divided by root 3, ln of 4 by root 3 minus kbt. That's all. But when I'm saying the free energy per particle, I must have a kbt here, right? Have they not mentioned the kbt? Okay, we have that minus 2 epsilon naught. Okay, if you say tan h of beta epsilon naught is equals to half, can you just do something more? Tan h of beta epsilon is equals to half. Can you say what is tan h of beta epsilon naught? Tan h of beta epsilon 0 is equals to half. That means e to the power of beta epsilon 0 minus e to the power of minus beta epsilon 0 divided by e to the power of beta epsilon 0 plus e to the power of minus beta epsilon 0 is equals to half. That implies if you multiply 2 here, 1 here, then e to the power of 2 e to the power of beta epsilon 0 minus e to the power of beta epsilon 0 is e to the power of beta epsilon 0. That thing should be equals to here e to the power of minus beta epsilon 0. I have minus 2 to the power of beta epsilon 0. So 3 e to the power of minus beta epsilon 0. And that is why I can say, if I bring it on this side, if I bring this on this side, then, or multiply e to the power of beta epsilon 0 on both the sides, so e to the power of 2 beta epsilon 0 is equal to 3. And that's why ln of 3 is 2 beta epsilon 0, or beta should be is equals to 1 by
2 epsilon naught into ln of 3, 1 by 2 epsilon naught into ln of 3. Beta means this, that's your beta means 1 by kbt, right? So here I can say one more thing, you can just do a little bit of more calculation. Tan each of this, as I know that e to the power of beta epsilon 0 is equal to now, so e to the power of beta epsilon 0 is basically your root 3. So from here you can get this. E to the power of beta epsilon 0 is actually your root 3, and from here you are getting that beta is this. So you can write it, kbt is your 1 by beta, so negative of, if beta is your this, then kbt is your what? Kbt is 2 epsilon naught by ln of 3. So this thing will become negative of 2 epsilon naught divided by ln of 3 into ln of 4 by root 3. That's all you have. Minus 2 epsilon naught by ln of 3, ln of 4 by root 3. That's the answer. Well, you have got beta equals to this, or from here also you can find out that ln of beta epsilon e to the power of beta epsilon then root 3 to the power of beta epsilon then root 3. So by any way you can solve this question, no issues on that. So from here also you can write e to the power of beta epsilon naught is root 3. Then cos h of beta epsilon naught क्या हो जाएगा? Cos h of beta epsilon naught will be actually equals to e to the power of beta epsilon naught plus e to the power of minus beta epsilon naught divided by 2, that is root 3, plus 1 by root 3 divided by 2. That means if you multiply root 3 and root 3 here, so 3 by root 3 plus 1, so 4 by root 3, so it's 2 by root 3. So it's 2 by root 3, so you can put here 2 by root 3 in place of cos h of beta epsilon naught. And you can erase this part. Erase this part. There is no need for this part. I mean, like, there's no need for this part. I can grab this entire thing here. Tan h of beta epsilon naught is half, so this thing is equals to half. From here I can find out that e to the power of beta epsilon naught is root 3, or beta is equals to this thing, 1 by 2 epsilon naught into ln of 3, and kbt is then this. So here in this case kbt I have put, ln of 4 by root 3 I have put, so my answer is here. Option A is correct. Okay then. If you have any queries, we can solve it. Otherwise, let's end the class here. And one more thing I would like to mention for students, जो भी बच्चे दिसंबर CSIR NET 2024 के लिए preparation कर रहे हो, you should go for the booster course, because that course includes first of all the detailed theory lecture recorded videos, जहाँ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है, और डिटेल थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो से आप लोगों को किसी भी लेक्चर के में दिक्कत आ रही है तो वहाँ से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के उसे समझ सकते हो. Apart from that, live classes में we will be solving loads of PYQs from various exams like CSIR NET, TIFR, JEST and GATE examinations from very first to very last. Apart from that, we will having the mock tests जो बहुत ज़्यादा important है before you appear for the examinations. Mock test भी नहीं दोगे तो तुम्हें definitely अपने speech के बारे में पता नहीं चलेगा, exam में time management के बारे में पता नहीं चलेगा. So mock test is very important. And when you have all these things, then there is a PhD mentorship program that if you crack the examination, then of course you will have to join some institute. So how will you have to prepare for the interview? कैसे interview के लिए prepare किया जाए, कैसे guide choose किया जाए, कौन से domain में जाया जाए research के लिए, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को knowledge दिया जाएगा. So thank you very much. I hope this class was helpful. If there is any doubt, please feel free to write your doubts in the comment section below. I will comment to that. Okay? और इस class का जो PDF है, I will just share the PDF in the Telegram channel.
Okay then. Thank you very much. I'm ending the class.